हेलो एवरीवन, नमस्कार। मैं आप सबको अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के वीडियो में हम जानेंगे कि डिफरेंट सोर्सेस क्या हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के और उनके क्या-क्या फीचर्स हैं। विच फीचर्स हैज बीन टेकन फ्रॉम विच कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द वर्ल्ड। सो आज की वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है और इन्हीं दोनों टॉपिक से रिलेटेड हम क्वेश्चन करने वाले हैं। अगर आप मेरे वीडियो को पहली बार देख रहे हो और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज डू सब्सक्राइब माय चैनल। सो लेट्स स्टार्ट टुडेज क्वेश्चन। सो टुडेज फर्स्ट क्वेश्चन इज, पहला क्वेश्चन क्या है? पहला क्वेश्चन है कि इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, द टर्म फेडरल अपीयर्स इन, मतलब जो टर्म फेडरल है कॉन्स्टिट्यूशन में, हम बोलते हैं ना कि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पॉलिटी है वो फेडरल है, यूनिटरी है, लाइक दिस। तो ये जो वर्ड फेडरल है वो प्रियम्बल कहाँ पे मेंशन है? सो प्रियम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन नहीं, बिल्कुल नहीं है। पार्ट 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, पार्ट 3 डील्स विद द फंडामेंटल राइट। दिस डील्स विद द फंडामेंटल राइट। तो क्या फंडामेंटल राइट में मेंशन है फेडरलिज्म? नो। क्या आर्टिकल 368 में मेंशन है? दिस इज पावर ऑफ पार्लियामेंट, पावर ऑफ पार्लियामेंट meant to amend the constitution। ठीक है। सो आर्टिकल 368 क्या कहता है? दिस इज द पावर ऑफ पार्लियामेंट टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन। क्या इस आर्टिकल में मेंशन है फेडरलिज्म, फेडरल वर्ड? नो। सो there is the federal word has not been mentioned in anywhere in the constitution of India. So this question is very important. So option D is the correct answer. This question has been asked many a time in different examination. So you should remember that the word federal has been never used in any part in any article of the constitution. Okay. But even though we always say that Indian polity is a federal or unitary or quasi-federal, so we use the word quasi-federal. So Indian constitution is a quasi-federal. So now the next question, इंडियन फेडरल स्ट्रक्चर इज इंस्पायर्ड। फेडरल स्ट्रक्चर मतलब फेडरलिज्म, तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का जो फेडरल स्ट्रक्चर है वो हमने कहाँ से लिया है? ठीक है। तो यूएसए से। यूएसए इज ऑल्सो अ फेडरल कंट्री, कनाडा इज ऑल्सो अ फेडरल कंट्री, स्विट्जरलैंड इज ऑल्सो अ फेडरल कंट्री एंड रशिया इज ऑल्सो फेडरल कंट्री। बस फेडरलिज्म हमने कहाँ से अडॉप्ट किया? सो मोस्ट सुइटेड द फेडरल स्ट्रक्चर दैट वेर अवेलेबल out of these countries was Canada. So we have taken the federalism, the federal structure, the federal polity from the Constitution of Canada. ओके। सो जो सिचुएशन हमारा इंडिया में है, इंडियन पॉलिटी में है कि नॉर्मल सिचुएशन में जो है कॉन्स्टिट्यूशन फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन के रूप में वर्क करता है, फेडरल पॉलिटी के फॉर्म में वर्क करता है, और एब नॉर्मल सिचुएशन, इमरजेंसी के सिचुएशन में वो यूनिटरी हो जाता है। ठीक है। सो दिस फीचर हैज बीन टेकन फ्रॉम द कनाडा। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? द इंडिया हैज बोरोड द कॉन्सेप्ट ऑफ फंडामेंटल राइट फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ विच कंट्री? सो फंडामेंटल राइट जो है हमने कहाँ से लिया है? तो फंडामेंटल राइट जो हमने यूएसए से लिया है। फंडामेंटल राइट यूएसए से लिया है। और यूएस ने कहाँ से लिया है? यूएस ने लिया है ब्रिटेन से। ठीक है। और ब्रिटेन में, यहाँ पे यूएस में किस फॉर्म में है? बिल ऑफ राइट्स के फॉर्म में है, और वहां से हमने लिया है फंडामेंटल राइट। और यूएसए में फंडामेंटल राइट कहाँ से लिया है? ब्रिटेन से लिया है। और ब्रिटेन में फंडामेंटल राइट की जो डॉक्यूमेंट है वो कब हुआ था? 1215 में यहाँ पे किंग जॉन थे, किंग जॉन। ठीक है। किंग जॉन ने है जो लोगों के प्रेशर में आके लोगों को फंडामेंटल राइट का एक डॉक्यूमेंट प्रेजेंट किया था, लोगों को कुछ फ्रीडम दिया था, कुछ फंडामेंटल राइट दिया था। तो वही डॉक्यूमेंट के फॉर्म में इवॉल्व हुआ
1215 में, 15 AD में। सो फंडामेंटल राइट सबसे पहले कहाँ पे हुआ, कहाँ पे आया, कहाँ पे दिया गया लोगों को, वो ब्रिटेन में। और यूएसए हैज टेकन दिस फंडामेंटल, यहाँ पे मैग्ना कार्टा, इस फंडामेंटल राइट को मैग्ना कार्टा कहा जाता है, मैग्ना कार्टा। और ये जो फंडामेंटल राइट है इसको हम बोलते हैं मैग्ना कार्टा ऑफ इंडिया, मैग्ना कार्टा ऑफ इंडिया, ठीक है, Magna Carta of India. So our correct answer is option B. We have taken the fundamental right from the Constitution of USA. Now the next question, the phrase equality before law. So in Article 14, you can see that there are two phrases: equality, equality before law, and equal protection, equal protection of law, ठीक है। So first phrase has been asked, this phrase has been taken from which country? So this phrase has been taken from Britain, ब्रिटेन से लिया गया है। तो ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन ए। बट इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ कहाँ से लिया गया है? यूएसए से लिया गया है, ठीक है। इक्वल, द फ्रेज इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ हैज बीन टेकन फ्रॉम यूएसए एंड इक्वालिटी बिफोर लॉ हैज बीन टेकन फ्रॉम ब्रिटेन। सो आवर करेक्ट आंसर इज ब्रिटेन, ऑप्शन ए। So let's move on. Next question. The sources of the basic structure theory of the Constitution of India is. Constitution में जो बेसिक स्ट्रक्चर थ्योरी की बात करते हैं, बेसिक स्ट्रक्चर की बात करते हैं, तो वो कहाँ से लिया गया है? तो कॉन्स्टिट्यूशन में ही दिया हुआ है. So this is not basic structure of the Constitution theory has not been mentioned in anywhere in the Constitution of India. So opinion of jurist, no. Opinion of jurist, no. Judicial interpretation, this is the correct answer, because in Keswanand Bharati case, Keswananda Bharati case, in Keswanand Bharati case, in 1973, 24th of April 1973, सुप्रीम कोर्ट ने एक जजमेंट दिया और उसमें बोला कि पार्लियामेंट कैन amend any part of the constitution including fundamental right, provided the basic structure of the constitution shouldn't be disturbed. मतलब पार्लियामेंट जो है कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड कर सकता है, किसी भी आर्टिकल को अमेंड कर सकता है, किसी भी पार्ट को अमेंड कर सकता है, इवन फंडामेंटल राइट को अमेंड कर सकता है, लेकिन जो बेसिक स्ट्रक्चर है, बेसिक स्ट्रक्चर जो मूल आधारभूत ढांचा है कॉन्स्टिट्यूशन का, वो चेंज नहीं कर सकता। अब उस समय जुडिशरी ने बोला कि, अब पूछा गया कि भाई बेसिक स्ट्रक्चर है क्या चीज, तो बोला कि डिफरेंट केसेस में हम बताएंगे कि भाई बेसिक स्ट्रक्चर क्या है, ठीक है। तो बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टूल्स दैट judiciary have in their hand. So basic structure doctrine has been evolved through judicial interpretation. So option C will be the correct answer. Which of the following is not the feature of the Indian Constitution? Out of given four options, which one is not the feature of the Indian Constitution? So you know, written Constitution is also a feature of Indian Constitution. Federalism is also a feature of Indian Constitution. Sovereignty of Parliament, क्या sovereignty of Parliament क्या ये फीचर है? नो. जुडिशियल रिव्यू, क्या जुडिशियल रिव्यू फीचर है? Judicial review. So judicial review is also an important feature of the Indian Constitution. And federalism, India is a federal structure in normal situation. So federalism is also one of the
मतलब फीचर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। और फेडरलिज्म प्योरली हम ये नहीं कर सकते कि अपना जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, इंडियन पॉलिटी है, सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट है, वो फेडरल है। तो हम क्या बोलते हैं, क्वासाई फेडरल, क्वासाई 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 फेडरल, quasi-federal. So this is one of the aspect, one of the feature of the Indian Constitution, and also we have written Constitution. So written Constitution is also one of the important feature of the Indian Constitution. What is not feature of the Indian Constitution is sovereignty of the Parliament, because in India Parliament is not sovereign. What is sovereign? Constitution of India. ठीक है, Parliament is not sovereign. Constitution is sovereign. Constitution is sovereign. And what uh, kind of authority constitution have, so that we can say that the constitution is sovereign? So constitution has got the power from people of India. People of India, ठीक है, people of India has authorized the constitution of India to be a sovereign. So in India parliament is not sovereign. अगर हम बात करें कि ब्रिटेन में क्या है, पार्लियामेंट इज सॉरेन, पार्लियामेंट पार्लियामेंट इज सॉरेन, parliament is sovereign, but in India parliament is not sovereign. So our question is which is not. So correct answer will be what? Option C. So option C is the correct answer. Now move on next question. Indian constitution is federal constitution, unitary constitution, quasi-federal constitution, and presidential. So out of given four options, which one is the most appropriate to say that what kind of constitution we have in India? So we cannot say that purely India is a federal constitution, federal polity. We also cannot say that India is a unitary polity. So what is Indian constitution? So Indian constitution is a blend of फेडरल एंड यूनिटी, मतलब इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन have some features of federal polity and some features of unity polity. Indian constitution looks like a federal polity in normal situation, and unitary polity, unitary constitution in abnormal situation. So we can say that India is a quasi-federal. So option C will be the correct answer. Now, which one of the following is not a part of the basic structure of the Indian Constitution? Basic structure कौन से नहीं है? तो rule of law. Supreme Court in their different cases has evolved different features that constitutes the basic structure of the Indian Constitution. So under this rule of law is the basic structure of the Indian Constitution. Secularism is also basic structure of the Indian Constitution. Parliament cannot change the kind of the features that ensure that the Indian Constitution is a secular. So secularism is the basic structure of the Indian Constitution. We in India is secular country. This is the important feature. Okay, and the Parliament cannot change these features. So this is the basic structure of the Indian Constitution. So Republican form of government. Republican form of government. We are not Republican form of government. Okay. Parliamentary form of government. Parliamentary form of government is the basic features of the Indian Constitution. So option C is the correct answer. Option C is the correct answer.
Option C is the correct answer. Republican form of government is not the basic structure of the Indian constitution. We are parliamentary, we follow parliamentary form of government, and this parliamentary form of government has been taken from where? Britain. Has been taken from Britain. Okay. Now the next question. Indian constitution is rigid. Indian constitution rigid है. Indian constitution flexible है. Neither rigid nor flexible. Partly rigid and partly flexible. So one of the some features of the Indian constitution is very rigid, and Parliament cannot change or amend that articles or that segment of the polity. So we can say that India is a rigid, and some parts are very flexible. Parliament can change that feature or change that article or amend that article through normal procedure of lawmaking. Okay, but some part of the Indian constitution is requires a special majority of both houses of parliament, and in some cases almost more than 50% of the states assent is also required. So we can say that India is neither a rigid nor a flexible constitution. So appropriate answer is option C. So next question. The idea of concurrent list has been in Indian constitution has been borrowed from concurrent list का जो आइडिया है वो कहाँ से लिया गया है? यूएसए से नहीं, यूएसए से नहीं लिया गया है, स्विट्जरलैंड नहीं, ऑस्ट्रेलिया. सो आइडिया ऑफ कॉन्करेंट लिस्ट हैज बीन बोरोड फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया. ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है. ओके. नाउ द आइडिया ऑफ डायरेक्टिव प्रिंसिपल of in state policy in Indian constitution has been taken from the constitution of each country. So DPSP has been taken from which country? तो DPSP कहाँ से लिया गया है? तो आयरलैंड से लिया गया है, आयरलैंड से. और आयरलैंड कहाँ से लिया है? तो स्पेन से लिया है, स्पेन से लिया है. आयरलैंड जो है डीपीएसपी कहाँ से लिया है? स्पेन से लिया है. और हमने कहाँ से लिया है? आयरलैंड से लिया. ठीक है, तो आई थिंक दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन फॉर यू. सो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर. नाउ मूविंग ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन. द फेडरल सिस्टम इन इंडिया was inspired from the constitution of the following. फेडरल जो सिस्टम है वो कहाँ से लिया गया है? तो कनाडा से लिया गया है, कनाडा से. Now, which of the following are the correct matching of the countries and the borrowed feature from of the Indian constitution from them? So bicameralism कहाँ से लिया गया है? Bicameralism यहाँ पे UK. So this is the correct. U.S.S.R. Indian judicial independence of judiciary and judicial review. This feature has been taken from where? This feature has been taken from USA. USA, not U.S.S.R. A 5-year plan, 5-year plan. So this is the correct, incorrect of matching. 5-year plan, 5-year plan we have taken from U.S.S.R. So this is also not the correct. So option second and third is wrong. So option third is wrong. So option A will be wrong. Option B also will be wrong, and option C will be, D also will be wrong. So we are left with only option C. That is the correct answer. 1/5 and 6. So fourth, language of the preamble. So 4 is also wrong because language of preamble has not been taken from Australia. Japan, law on which the Supreme Court function. This feature has been taken from the Japan. Method of election of president has been taken from Ireland. This is also correct. So only first, fifth, and sixth is correct. So option C will be the right answer. Now, which of the following statement about the constitution is correct?
The popular sovereignty and adult franchise are the basic feature of the constitution. बिल्कुल correct बात है. Parliament cannot change uh, adult franchise or popular sovereignty. So this is one of the important feature of the Indian constitution. Basic feature. The constitution is so far as division of power. जो सेंट्रल स्टेट रिलेशन की बात है, जो लिस्ट की बात है, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट एंड कंकरेंट लिस्ट, इसमें कोई चेंजेस पार्लियामेंट नहीं कर सकता. ठीक है. दिस इज आल्सो पार्ट ऑफ द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. ओके. और ये क्या है, कर सकता है, थोड़ा सा रिजिड है. बिकॉज अगर इसमें कोई वो चेंज करना चाहे तो लगभग 50% ऑफ स्टेट्स, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के असेंट की जरूरत पड़ेगी, जो कि बहुत ही डिफिकल्ट है. सो वी कैन से दैट दिस पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इज समवट रिजिड. ओके. सो दिस इज द करेक्ट ऑप्शन. Now, the constitution recognizes interdependence of civil and economic right. बिल्कुल करेक्ट बात है. The constitution mentions direct control by the people, such as the referendum, initiative, and recall. So, the word referendum, initiative, and recall is not a feature of the Indian constitution, and these features have not been mentioned in Indian constitution. But this is Switzerland. स्विट्जरलैंड, ये फीचर जो है स्विट्जरलैंड में चलता है, इंडिया में नहीं चलता है. सो 4 इज द रॉन्ग. तो जहां जहां 4 है वो क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा. और दूसरा भी सही है, तीसरा भी सही है. सो ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट आंसर. ओके. नाउ मूविंग ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन. कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट. द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज एन अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन. क्या ये बात सही है? नो, बिल्कुल गलत है. इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज अ written constitution. So it is a written constitution. So option second will be the correct answer. It is largely based on the Government of India Act. मैंने आपको बताया कि most of the provisions of the Indian Constitution has been taken from Government of India Act 1935. You can say that जो Constitution का skeleton है, जो मूल आधारभूत ढांचा है, वो क्या है? Government of India Act 1935 है. ठीक है. A gift of the British Parliament. No, this is not a gift of the Indian Constitution. Is not a gift of the British Parliament, because we have created it, we have made it. Though some important features that suits Indian society at that time, Indian economy at that time, we have taken from other countries. Okay, so we have made it, we have created, we have given ourselves this constitution. So this is not a gift of the British Parliament. So option 4 is the wrong. So where 4 is the wrong, that option will be incorrect. So, and first is also incorrect. So this is incorrect. So we have eliminated 3 options. So only option B is the correct. Second and third is correct. Okay. Now move on next question. Match list first, list second, and select the correct answer is in the code given below. So this is important provisions and sources of the constitution. ठीक है. So emergency provision कहाँ से लिया गया है? तो जर्मनी से लिया गया है. फंडामेंटल राइट कहाँ से लिया गया है? तो यूनाइटेड स्टेट्स से लिया गया है. पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट कहाँ से लिया गया है? यूनाइटेड किंगडम, यूके से लिया गया है. एंड डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी कहाँ से लिया गया है? तो आयरलैंड से लिया गया है. तो आप कह सकते हो कि जो ए का ऑप्शन होगा वो क्या होगा? 2, 3, ए का ऑप्शन 4 हो जाएगा, और बी का फंडामेंटल राइट 3 हो जाएगा, और सी का हो जाएगा आपका 2, एंड डी का हो जाएगा 1. तो 4, 3, 2, 1. तो 4, 3, 2, 1. So option C will be the correct answer. 4, 3, 2, 1 is the correct answer. So option C will be the correct answer. Now moving on next question.
Consider the following statement. The salient feature of the Indian Constitution provides for single citizenship for the whole India. बिल्कुल correct option है, because in India we have single citizenship, but in USA, in USA क्या है? Dual citizenship. Dual citizenship. ठीक है, यूएसए में क्या है? डुअल सिटीजनशिप है, बट इन इंडिया वी हैव सिंगल सिटीजनशिप फॉर होल इंडिया. Strictly federal form of government. We are not strictly federal form of government. We are quasi-federal. Quasi-federal. ठीक है, quasi-federal. Unique blend of rigidity and flexibility. This is very important. A unique blend of rigidity and flexibility. So option first and third is correct. Second is wrong. So here second is wrong. This option will be eliminated. This also will also be eliminated, and C. So only through observing second statement we can eliminate three options. We are left with only one option, that is option D. First and third is correct. So option D will be the right answer. So option D will be the right answer. Now moving on, next question. Which of the following are considered as a part of the basic structure of the constitution? Republican and democratic form of government. Yeah, this is the basic form of government. Secular character of the Indian Constitution. This is important basic feature of the Indian Constitution. Division between fundamental right and directive principle. This is not an important feature of the Indian Constitution. Basic structure of the Indian Constitution. Federal character of the Indian Constitution. This is the important feature of the Indian Constitution. So option 3 is wrong. So where 3 is wrong, that option will be eliminated. So we are left with only option D. So D is the correct answer. In India, Republican and democratic form of the government constitute the basic form of basic structure of the constitution. Parliament cannot change this. Secular character. India is secular, so this cannot be changed by the parliament. Okay, इंडिया इज अ फेडरल कैरेक्टर. जो फेडरल कैरेक्टर है नॉर्मल सिचुएशन में उसको पार्लियामेंट चेंज नहीं कर सकता. दिस आल्सो कॉन्स्टिट्यूट द बेसिक फीचर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. Okay, so that's all for today, and we are meeting again in next video. अगर